Good morning, everyone. I am Avni, your tech host, and welcome to the Daily Tech News Bulletin brought to you by IT Voice. In today's news, we will be covering news about Brave Search introduces Answer with AI feature, WhatsApp enhances user experience with contact rearrangement and recently online feature, Google One announces changes and service updates, OpenAI appoints Indian executive to strengthen presence in India. Samsung extends free screen replacement offer for Galaxy S series phones in India. Intel appoints new business head for India and Asia Pacific region. Delta emerges as top rated retro game Emulator on the App Store. And more. To skip to any particular news story, use the chapters below. And don't forget to subscribe to IT Voice to stay up to date on all the latest tech news. Brave Search launches Answer with AI, providing structured answers without data gathering by synthesizing information from multiple sources. The feature enhances user experience by offering intelligible answers to queries, including summarizing reviews and highlighting distinctive features. It employs a combination of large language models like Mistral 8X 7B and Mistral 7B, reflecting Brave's commitment to AI-powered search innovation. WhatsApp introduces basic editions allowing users to rearrange contacts in the favorite tab and see recently online contacts. Users can prioritize top contacts for easier communication, while the recently online feature enhances engagement by displaying recent activity. Google One members will experience changes starting May 15, 2024, including the addition of exclusive features and AI-powered tools for Pixel users. Editing features like Magic Eraser and Portrait Light will be extended to non-Pixel models, while free print order delivery from Google Photos will be discontinued in certain countries. Existing cloud storage benefits remain unchanged, reflecting Google's commitment to providing valuable services to users. OpenAI hires Pragya Mishra as an Indian executive to ensure compliance with regulations governing artificial intelligence in India. Mishra's legal expertise will aid OpenAI in navigating India's regulatory landscape, strengthening its presence in this rapidly growing technological market. Samsung extends the free screen replacement offer for the Galaxy S series phones in India, addressing the green line display issue. The company reaffirms its commitment to customer satisfaction and longer OS updates, enhancing the reliability of devices like the Galaxy S22. Intel appoints Santosh Vishwanathan as its new business head in India and Hans Chong as General Manager of SMG Asia Pacific and Japan. The appointment reflects Intel's focus on capitalizing on India's rapid growth and business opportunities, leveraging local expertise to drive value and revenue growth. Delta, a game emulator app for iPhone, becomes the top-rated app on the App Store, allowing users to play classic retro games. The app's approval reflects Apple's shift towards a more open ecosystem, despite legal issues surrounding emulation and ROMs. This is Avni signing off. Stay tuned and subscribe to IT Voice for all the latest tech news. क्या आपका भी ड्राइव कभी करप्ट हुआ है या रिकॉर्ड हुए फोटोज या वीडियोस नहीं मिलते हैं? डोंट वरी, आज एबीसी ऑफ बिल्डिंग ऑनलाइन बिजनेस सीरीज में हम लेकर आए हैं अल्फाबेट वी से वीएम और विमियो। विमियो एक वीडियो शेयरिंग और क्रिएशन प्लेटफॉर्म है और वीएम डेटा बैकअप और रिकवरी में हेल्प करता है। अब विमियो के साथ अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं। ये सिर्फ एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं, ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक पावर हाउस है। एआई पावर्ड वीडियो एडिटिंग से लेकर मजबूत मार्केटिंग टूल्स और सीमलेस वर्चुअल इवेंट होस्टिंग तक, विमियो में सब कुछ है जो आपको अपने वीडियो प्रोजेक्ट्स को बिजनेस में लाने के लिए चाहिए। और अब बात करते हैं वीएम की। वीएम डेटा गार्डियन एंजल है। बैकअप, डिजास्टर रिकवरी और इंटेलिजेंट डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में स्पेशलाइज करते हुए वीएम इंश्योर करता है कि आपका क्रिटिकल बिजनेस डेटा सुरक्षित रहे और हमेशा अवेलेबल रहे, चाहे वो वर्चुअल हो, फिजिकल हो या मल्टी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। वीएम हमेशा आपका साथ देता है।
तो आज एपिसोड में हमने देखी वीएम और वीमियो के कुछ खास फीचर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में अल्फाबेट W के साथ।